क्या कहेंगे हम इस इंडियन टीम के बारे में दोस्तों, जो अब 7-0 है इस वर्ल्ड कप में। अभी 302 रन से श्रीलंका को धोया, पिछाड़ा, हराया। Whatever adjective you want to use to describe India's 302 drubbing of the Sri Lankan team at the Wankhede Stadium, be my guest, use whatever term you want to use. Before I get into dissecting India's astonishing performance and how abject Sri Lanka were, एक बार फिर से मैं आपके सामने ये बात लाना चाहूंगा कि दिस इज अ बैड फर्स्ट वर्ल्ड कप। कुशल मेंडिस ने क्या सोचकर इस इंडियन टीम को अंदर किया बैटिंग करने के लिए, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं एक बार फिर से कहूंगा, सारे वर्ल्ड कप टीम्स को जो खेल रहे हैं टूर्नामेंट इंडिया में, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, टॉस के क्या करें, हायर मी फॉर फ्री। मुझे एक पाई नहीं चाहिए, मैं आपको अपनी सलाह दूंगा, मैं आपको अपनी राय दूंगा, और मैं आपको शायद कुछ मैचेस जिता भी दूं, क्योंकि आप लोग जो बार बार टॉस जीत के फील्डिंग कर रहे हो और सामने 350 रन दे रहे हो, भैया आपसे ना हो पाएगा। तो सीरियसली कॉन्टैक्ट मी on my social media platforms, any World Cup team struggling in this tournament, to figure out what to do when you win the toss in this World Cup. It is, once again, if anybody has any doubts, please dispel such doubts. This is a bat first World Cup. And Sri Lanka, once again, just like they did against Sri Lanka, against South Africa at the Kotla, by putting them in, they blundered in their tactics. हो सके अगर वो कैच ले लें, शुभमन गिल को जल्दी आउट कर लेते, विराट कोहली का कैच पकड़ लेते, तो थोड़े रन कम बनते। लेकिन कितने बनते? 250, 280। आपकी टीम तो 55 पे ऑल आउट हो गई दोस्तों, 55 ऑल आउट। एंड इस साल इंडिया वर्सेस श्रीलंका, आपको बता दूं कितनी बार इस इंडियन टीम ने, खासकर मोहम्मद सिराज ने, श्रीलंका का हाल बुरा किया। बैक इन जनवरी त्रिवेंडम में केवल 73 रन पे सिराज ने श्रीलंका को ऑल आउट किया, जब इंडिया ने 390 रन बनाए थे अपनी पारी में। कुछ ही महीने पहले, less than 6 weeks ago, Asia Cup final, Sri Lanka at their fortress of the Premadasa were bowled out for 50, and now 55 all out. Something about facing India, something about seeing Mohammad Siraj or his Sri Lankan team का मौसम बिगड़ जाता है. And let me say one more thing. By India's batting standards, this was a sloppy match. रोहित शर्मा केवल 4 पे आउट हुए मैच की दूसरी गेंद पर। विराट कोहली को ड्रॉप किया गया जल्दी, शुभमन गिल को ड्रॉप किया jaldi. It looked like both would get hundreds. Shubman Gill got 92, Virat Kohli got 88. Shreyas Iyer brought some much needed momentum, but he also missed 100. So, on a day when India's batting collectively was, by their high standards, somewhat sloppy, they still put up 357 and bowled out Sri Lanka for 55. This just shows how dangerous this Indian cricket team is. बहुत बार कह चुका हूं, ये इंडिया का ऑल टाइम बेस्ट वर्ल्ड कप बॉलिंग अटैक है। अगर आप में से कोई हैं जो अभी भी शक करते हैं स्टेटमेंट पर, तो देख लीजिए आज बुमराह, सिराज और मोहम्मद शामी ने क्या किया। मोहम्मद शामी, 4 matches he was on the bench, he was deemed surplus to India's requirements. Now after 3 matches he has 14 wickets, and he will, by the time this World Cup is done, he will have gone past Zahir Khan and Javagal Srinath as India's most successful overall wicket taker in World Cup history. And if, when, not if, India win this World Cup, the credit once again will go to the bowlers. Sri Lanka, 55 all out. It is unplayable when Mohammad Siraj, Jasprit Bumrah, and Mohammad Shami do these things under light. जी हाँ, श्रीलंका की बैटिंग बहुत खराब है इस वर्ल्ड कप में. They had to go through the qualifiers. That underlines where their ODI cricket is. But still, it doesn't matter what team is. How can any team, no matter how good they are, cope with Siraj, Bumrah, and Shami under lights? And then, if you manage to pass that three-prong test, you have Kuldeep Yadav and Ravindra Jadeja waiting. और दोस्तों आखिरी बात कहूंगा, फिर मैं आपके सवाल लूंगा इस लाइव स्ट्रीम पर। अभी 5 तारीख ईडन गार्डन्स को जो इंडिया का मुकाबला है साउथ अफ्रीका के साथ, जिनके पास 12 पॉइंट्स है। अब देखिए साउथ अफ्रीकन टीम का आधा मौसम आज बिगड़ गया। अब वो सोच रहे होंगे, यार इस इंडियन टीम की बॉलिंग देखो। Will South Africa want to bat first against India? Will they want to chase first against India? Both of them will have left them with some uncomfortable, somewhat worrying thoughts ahead of that clash on Sunday at Eden Gardens. Once again, let's celebrate this Indian team, which remains unbeaten in the World Cup. They're now 7-0 after rolling out Sri Lanka for just 55. A few worries were there. Shreyas Iyer अब तक बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, उन्होंने आज कर दिया। शुभमन गिल पिछले 4 मैच में केवल 100 रन बना चुके थे, उन्होंने आज run mare 92. And Mohammad Siraj, who up till this match had not really hit top peak in any match, if anybody had doubts about him, he has once again dispelled these doubts. This is a very, very smooth, a very well-oiled Indian team, which, mark my words, is going into the semifinals unbeaten on 9-0.
चलिए, अब आते हैं आपके सवाल पर। मैं, बाय द वे, Meha might pop in on this show. She said she might come in when she gets our son Caden to sleep. It's going to be a long night. Let me quickly go through questions. अरे कहाँ, हम तो घर पे, आप कहाँ? Is Sri Lanka a qualifier team? इससे अच्छा West Indies को? Again, Anup, we know, I've been saying Sri Lanka, hats off to them for winning two matches, but they're very, very poor when it comes to one-day cricket. Utsav, Jay bhai, what's your take on this hate monger Farid Khan? अरे छोड़ो इन लोग को यार, enjoy करो. Don't let these guys. एक डैनियल अलेक्जेंडर नाम का बेवकूफ है, निहायती निकम्मा, इतनी गंदगी फैलाता है वो, आज मैंने उसको भी चुप करा दिया. गो चेक माय ट्विटर हैंडल. छोड़ो यार, एंजॉय करो. तौबा तौबा जेमी, ये क्या कर दिया? एसएल की ऐसी कौन सी दुश्मनी भैया? इसी साल 73, 50 और 55 इस श्रीलंकन टीम को मोहम्मद सिराज को देखते ही बहुत घबराना होता है. वाह, बहुत मजा. Mohammad Shami has become just the second bowler in ODI history, says Deepak Ira, to bag 3 consecutive 4-wicket hauls more than once. क्या बात है यार, सही बात है. This is his second such streak after having returned 4 for 40, 4 for 16 and 5 for 69. Very nice stat, my friend. Leo कह रहे रोहित आज बहुत कम पे आउट हो गया. होना था यार, हर मैच में कहां मारेंगे. But I said, despite Rohit getting out for just 4, despite Kohli and Shubman Gill getting out before hundreds, India still got 357. That's a very dangerous sign for teams. Wondering, अगर रोहित आज चलते, अगर शुभमन गिल 100 मारते, India would have put up 450 for the loss of 4 wickets, and they still would have bowled out this abject Sri Lankan team for 55 all out. We have just witnessed almost the biggest margin of victory ever, but unfortunately, India didn't get to 400. भैया डैनियल में किस बात का एटीट्यूड है? अरे छोड़ो, निकम्मा है वो. He's a hate monger. He's frustrated. एनीवेज, मैं उसको चुप कराने का मौका नहीं छोड़ता मैं. जी भाई, अब इसे कहते हैं फेंटे लगाना. फेंटे लगाना, बिल्कुल सही. Vipul, I told my wife, I really wish I could have gone, though I was very, very sick that day. I do regret not being there to watch this annihilation of Sri Lanka. लेकिन कोई बात नहीं, आगे भी और मैचेस हैं. जय भाई, जशन, बिल्कुल पाजी, बस ऐसे को आना है. हराएंगे पाजी, हराएंगे. साउथ अफ्रीका का मौसम खराब हो गया ये मैच देखकर. देखना प्लीज, एक दो केले खाकर इनके कुछ प्लेयर्स को इंजर कर दे. कोई जरूरत नहीं है, साउथ अफ्रीका की फट चुकी है. हैज द पिच कंडीशन चेंज ओवर द इन इंडिया? नहीं, ओवरऑल वही है. थोड़ा थोड़ा बाउंस ज्यादा है, बट दैट्स बिकॉज इंडिया हैव फास्ट बॉलर्स. जब तक आपके पास केवल 2 फास्ट बॉलर्स थे, तो जाहिर सी बात है पार्ट ऑफ विकेट होते, थोड़े स्पिनिंग विकेट होते. अब आपके पास 6-7 बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, सो यू आर सीइंग अ बिट मोर. सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड. अरे मिस्टर जॉन पॉल, आपको मैंने 1 घंटे पहले व्हाट्सएप किया था कि आप रसम खाइए, आप कैरेट केक खाइए, बनाना केक खाइए, फिल्टर कॉफी पीजिए, टेंशन मत लो. Until yesterday even I was saying South Africa match might be tricky. After this match, South Africa is the one who should be worried, not you, sir. Don't be nervous. चलिए, let's say like this. South Africa हर टीम के सामने 450 मार रही है, 400 मार रही है. इंडिया के सामने 250 बनाएगी, 280 बनाएगी, फिर भी हम जीत जाएंगे. और if Rohit Sharma wins the toss and he uses his brains and he bats first, India can get to 270, 280 on a bad day against South Africa's very good pace attack. But can South Africa chase 250? No, we've seen this World Cup. They cannot. ऊपर से can they chase against the best Indian attack ever fielded in a World Cup? नहीं भैया, अब वो टेंशन नहीं है. India 9-0 going into the semifinals. Exactly 100, Jamie. South Africa will be in a dilemma now whether to bat or bowl. बिल्कुल, इनका मौसम बिगाड़ चुका है प्रतीक. India has most lethal bowling attack. बिल्कुल नितिन, ever of all times. Indian team is in condition to choose its opponents in semi-final. होगा तो वानखड़े में. India's main test will be a knockout. बिल्कुल, I'm not going to debate that. मैं इतने समय से कह रहा हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा टेस्ट सेमीफाइनल में आएगा. टीम की मुझे फिक्र नहीं है. रोहित शर्मा टॉस में क्या करते हैं, सेमीफाइनल में आप चेस नहीं कर सकते. हरदीप जय भाई, शामी ऑन फायर. मैंने वर्ल्ड कप से पहले कहा था ना शामी फोड़ेगा, और आपने उसकी फॉर्म पर सवाल उठता है. बिल्कुल, उस टाइम शामी का फॉर्म खराब नहीं था. और देखिए, अगेन मैं गलत था, मैंने शामी को अंडर एस्टिमेट किया. लेकिन हार्दिक भाई, आपको यह भी तो मानना पड़ेगा कि 4 मैच तक मोहम्मद शामी बेंच पे थे. यानी कि इंडिया ने खुद उन पे इतना बिलीफ नहीं किया जो आप करते हैं. शामी सिर्फ आए, शामी केवल 11 में आए जब हार्दिक पांड्या को इंजरी हुई थी. हार्दिक पांड्या को इंजरी ना होती तो शामी अब तक बेंच पे होते भाई. तो यस, आई वाज रॉन्ग, आई अंडर एस्टिमेटेड हिम, बट इट डजंट चेंज माय पॉइंट. मेरा पॉइंट यह था कि यहां पे शामी की काबिलियत की बात नहीं है. इंडिया का डायलेमा ही ऐसा है कि उनकी थिंकिंग के बेसिस
तीन पेस बॉलर, तीन स्पेशलिस्ट पेस बॉलर नहीं बनते। और दोबारा मेरी बात मानिए हार्दिक भाई, अगर पांड्या को चोट ना लगती तो अभी भी शामी बेंच पे होते। ये शामी की काबिलियत है, ये उनकी कला को सलाम है कि वो बेंच से आके 4 मैच में 14 विकेट ले गए। और अब इंडिया के पास मैं मानता हूं बेस्ट ऑल टाइम एवर bowling attack है। Jay boy, question, is India peaking too early? Not at all, my friend Rahul. Not at all. They're not even near peaking yet. Peaking is when you put up 400 for three, like I had predicted they would, and then you bowl. This is not a peak. अभी भी दो तीन problems है. Tension ना लो. I just wanted to know whose idea it was to include Shardul instead of Shami. Rohit Sharma and Rahul Dravid as a pair, validly, I would say, they didn't feel like having five bowlers would be a good choice because it weakens your batting. At the time of selection, Shardul was doing things. लेकिन जब शार्दुल का बैटिंग और bowling form एक तरफ गया, his stocks dipped. लेकिन जैसे कि मैंने अभी हार्दिक भाई को बताया था, मोहम्मद शामी अब तक बाहर होते अगर हार्दिक पांड्या को चोट नहीं लगती। और बुरा मत मानिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या के चोट लगने से इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन और भी मजबूत हो गई। बिकॉज हार्दिक पांड्या भले ही ऑन स्टेटस इनकी जगह बनती थी 11 में, लेकिन वो एज अ बॉलर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। एज अ बैट्समैन उनकी एक पारी आई, जो चोट पांड्या को लगी है, और आप लोग में से बहुत लोग यहां से हैरान होंगे कि मैं कह रहा हूं it's actually worked to India's benefit because you've been forced to bring Shami off the bench after 4 matches, and in 3 matches Shami has taken 14 wickets. He's now looking like India's best pace bowler. So it's thanks to Hardik Pandya's injury that India are now looking even tougher, because had they had this much faith in Shami and not Shardul, well, they would have played Shami from day one, right? Jemai, the most wickets in the tournament race is going to become a joke if Shami keeps it up. बिल्कुल, and I think Shami will. He's got that hunger कि साला तुमने 4 मैच तक मेरे को बाहर किया था, तुमने 2015 में मेरे को 4 मैच के लिए बाहर किया, तुमने दोबारा किया था, whatever it is. I mean, I'm exaggerating, but this just says Shami's bhook, his hunger. Salam, boss. I have DM'd you as well as mailed you. Where have you DM'd me? By the way, I blocked all Instagram DMs 2 years ago. You must have mailed me on my other email. I have not checked for a week. I will check it tomorrow morning, my friend Utsav. Thanks for reminding me. This World Cup started with one minnow, Netherlands, and will end with two more minnows, England, Sri Lanka. सही बात है। क्या इससे बेहतर मौका मिलेगा वर्ल्ड कप जीतने के लिए? नहीं, मैंने जैन के महीने में कहा था कि क्योंकि मेरे हिसाब से जैन में 11 महीने पहले आई सेड द स्टैंडर्ड ऑफ वनडे क्रिकेट इज सो पुअर, देयर इज नॉट इनफ चैलेंजर्स टू इंडिया एट होम। दिस इज व्हाई, अगेन आप लोग बहुत बार सुन चुके हो, मैंने कहा इंडिया एक आंख बंद कर कर वर्ल्ड कप जीतेगी, और लग रहा है अब तो दो आंख खुल के जीतेगी। लाला फूल नीला फूल समी भाई ब्यूटीफुल, बहुत 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 खूब। श्रीलंका इंप्रूव क्यों नहीं करती इतना हारने के बाद? ये लोग सबक क्यों लेते? इनके पास टैलेंट नहीं है, ये 8 साल से टैलेंट ढूंढ रहे। इनकी क्रिकेट इतनी खराब थी कि इनको क्वालिफायर्स खेलना पड़ा यार। उमर मुगल, डू यू थिंक इंडिया मेंटेनिंग अ विनिंग मोमेंटम गिव इंडिया हैंड इन ईच मैच? बिल्कुल, इंडिया आर अनबीटेबल राइट नाउ माय फ्रेंड। Akhilesh, Jay always seems to cruise through the group stage. When it comes to knockouts, we go into our shells and bottle it. It's not like India have cruise, this is cruising। इससे पहले इंडिया कभी भी अनबीटन नहीं रही। 2019 में शायद 2 मैच हारी, 15 में 1-2 मैच हारी। इंडिया हैव नेवर बीन सो डोमिनेंट। 2011 जब धोनी की टीम वर्ल्ड कप जीती, ये काफी 3-4 खराब मैच खेल चुकी थी, एक मैच टाई भी हुआ था। This is a different level because the bowling is very confident. This team, unlike Dhoni's team, has cracked the template in the last 4 years, 5 years of winning ODIs at home. Their batsmen know how to make 400, and their bowlers know how to bowl out teams for under 200. So I will disagree, Akhilesh, with your thing about cruise. India have never cruised. Last time it was not easy. This time it's so damn easy that I'm saying they're going to be 9-0. और पहला सेमीफाइनल वांखड़े टॉस पे डिसाइड होगा। जी भाई, हार्दिक पांड्या कम्स इन देन स्काई गोज आउट, क्या रोहित गट से डिसीजन ले पाएगा? पता नहीं भाई, बहुत बहुत मुश्किल है। अभी फॉर्म में तो फॉर्म की बेसिस पर, नॉट रेपुटेशन, नॉट वाइस कैप्टनसी, फॉर्म के बेसिस पे हार्दिक पांड्या की जगह नहीं बनती। लेकिन अगर आएंगे वो, तो हाँ, मेरे हिसाब से स्काई बाहर जाएंगे। केएल राहुल डीआरएस, बहुत सहमत नायक, बिल्कुल सही कहा आपने। शमी इज ऑलरेडी पास द हीरो, ओह ही इज ऑलरेडी पास देम। अच्छा, 45, वेल, सर आंखों पर, देयर यू गो। अंकुर, गॉड ब्लेस यू। Jamie, your prediction about Pak versus New Zealand? सर मैं कह रहा हूं न्यूजीलैंड। पता है आपको थोड़ा डर है पाकिस्तान को लेकर, घबराना मत। एज इमरान खान से घबराना नहीं है, पाकिस्तान नहीं जा रही सेमीफाइनल्स।
Enraj is back, a good friend, a good person. The knockout semifinals should be on the pattern of IPL for fair result, which BCI had got its under the World Cup format. I think we'll see changes 4 years from now. Ashutosh, absolute clinical from Indian bowling. Sri Lanka got minnow experience. SL lost match in the first 2 overs. No, SL lost the match at the toss by saying India batting karo. I've already answered Pratik's question. Sir, not for Ma 3. Pata nahi kya keh rahe ho, Akash Das. Old question, but Hardik coming back. Again, discussed right now. Shami bowling with an average of 6.7. Crazy. What a guy. रमेश सर ऑलरेडी सवाल का जवाब दे चुका हूँ जय भाई अगर हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले ही हारा देंगे तो व्हाई डू वी नीड सेमीज हमें कप दे दो ले लो यार ले लो your assessment of conditions at Kolkata, like I said this morning and yesterday, big ground, slow and low wicket. You need to play Shami. You might need to play another spinner, but I think इस performance के बाद इंडिया कुछ नहीं करेगी भाई जो चल रहा है गुड लक हरा all that stuff towards you. कुछ चेंज मत करना ये टीम खिलाओ और टॉस जीत के बैटिंग करो कंडीशंस वोंट मैटर साउथ अफ्रीका लिख के लो इस मैच के बाद साउथ अफ्रीकन वाले घबरा गए नजर न लग जाए कोई बात नहीं हाय महेंद्र अब तो ऐसा लग रहा है कि बस नेदरलैंड से ना हार जाए अरे कोई चांस नहीं कौन क्या बात कर रहे हो इंडिया वर्सेस पाक सेमीज में अगर होता तो चैलेंज मिल सकता था नहीं पाकिस्तान इज खत्म खलास फ्लैट शिखर सिंह हेलो जय भाई गुड बैक हियर yes no champions of 13 was not invincible there were still some problems I still feel you compare this bowling attack hands down the best. Siraj, Bumrah, Shami, outstanding. Ashwin on the bench, Shardul on the bench, Hardik Pandya on the bench, Jadeja and Kuldeep. This is India's best bowling attack in any World Cup. I will fight anyone who disagrees. Yes, this is lethal bowling, as good as West Indies in the 80s. Different skill for those four, but yes, for the modern conditions, outstanding the best. Devang is back. As always, he says, good morning, afternoon, evening, everyone. Another great performance by Team India. Good to see two underperforming players chipping in. Exactly my point, my friend. But feel for SL, what a downfall from 11. Bilkul, what a downfall. Shahnawaz Bhai, I asked you, Jain Bhai, when will Mohammad Shami take 45? And you told up semi-final, but Shami told no need to wait. Bilkul, he's like, मैं अपना कर रहा हूँ छा गया गुरु के राहुल मेरी life and the beat fill I have no idea what that says. If India plays Australia in the semi-final, that could be challenging. Challenging if Rohit Sharma makes a mistake of putting them into bat. So yes. Mahela Jayawardene was at Wankhede. He was like, मैंने Adele ने 100 मारा था पता नहीं क्या कह रहे हो. Anyways, guys, I've got to should we bowl first against? I say no, don't bowl, bat. Who do you want in finals against India? It doesn't matter because India is winning. कल का match best होगा इस World Cup का in the group stage. Oh, tomorrow's a good match, na? Is this the best quartet of all time? Walker, Wisdom are also good, but would have better stats if they had DRS. They would have, but again, for India, this is the best deck. Guys, I have to go now. I've got to do a match report. I've got to record a show for tomorrow. I've got to also do a video for my other channel because I'm coming up to 3 lakh subscribers and my other channel, after 4 months, got monetized. Busy night, no rest for the hardworking. Love you all. Chak de fatte. Jai Hind. See you tomorrow. Bye. Good night.